हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ स्टूडेंट इज कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद किया जाए। तो ये जो डिज़ाइंड है ना, दे आर डिज़ाइंड इन सच अ मैनर कि ये एक कंटिन्यूटी में है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इज़, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और एक कंटिन्यूटी में दिए हुए हैं। कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो SDG 1 जो है, सबसे पहले द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इज टू रिड्यूस और एंड पॉवर्टी। When there will be poverty, then there will be so much of other problems in the society. There will not be any kind of sustainable development, and many things stems from poverty itself. So poverty is the base. The first thing is to eliminate poverty. When we will reduce end poverty, we will also ensure that there is adequate food security, there is end of hunger. When we talk about food security, it does not only mean providing ration, but also it means to address the hidden hunger problem, issue of nutrition, issue of micronutrients, lack of micronutrients. So first गरीबी हटेगी, देन भूखमरी हटेगी। थर्ड नंबर पे जब गरीबी और भूखमरी हट जाएगी, थर्ड नंबर पे है हेल्थ को मेंटेन करना। जब दोनों चीज़ें हो गई तो फिर हेल्थ को मेंटेन करना, कि आदमी के पास पैसा भी आ गया, गरीबी डिसेंट जो है वो हट गई है, खाने को अब है अवेलेबल। अब तीसरा क्या है कि उसकी वेलबींग रहे, कोई डिजीज़ है तो वो ना हो। वेलबींग का मतलब ये भी है कि ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क विथ फुल एफिशिएंसी, तभी तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। एंड अगर एजुकेशन भी लेना है तो उसके लिए भी वेलबींग होना ज़रूरी है। द फोर्थ वन इज़ एजुकेशन प्रोवाइड करना। जब हमने वेलबींग इंश्योर कर दिया, अब क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन में भी इक्विटी मेंटेन करना। इक्विटी मेंटेन करने का मतलब है कि जो गरीब है, अमीर है, ऑफ डिफरेंट जेंडर्स जो है, सबको बराबर। एंड व्हेन वी हैव अचीव्ड दिस, देन कम्स दी SDG 5, जहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, कटिंग अक्रॉस जेंडर। अब SDG 5 को तो याद करने का एक और ट्रिक भी है। देयर वाज वन फेमस सीरियल ऑफ 90s, हम पाँच, एंड इट वाज दिस ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ एम्पावर्ड वुमेन। ऐसे भी पाँच का मतलब एक मुट्ठी होती है ना, और मुट्ठी से याद आता है नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब SDG 5 को कैसे याद कर सकते हो। When we have ensured gender equality empowerment, now comes the basic decency, dignity of women. Sanitation and water, say, even though it affects both the male and female, but if there is a lack of water, the more affected gender is female. They have to go 10-12 kilometers to collect water. If there is no sanitation, they have to go in the farmlands, and then they are prone to so much of crime, so much of diseases, etc. Many things they are prone to. They have to go in the early morning, and they have to control it full day, and it affects their well-being totally. So after that, it is there. Now the SDG 7 is ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. Now, when we have got the sanitation, water, the upcoming basic necessity is having energy, having electricity, because everything which is derived in this world is through energy, and energy should be sustainable. It should not be derived from the fossil fuels. Then, after we have ensured energy, we will now work on developing a economy which provides employment, which provides inclusive development, which provides decent work for all, because these are the basics. Above that only we can ensure any kind of economic development. If these are not there, there is no meaning of sustainable, inclusive, and equitable economic growth. Now, after we have ensured the economic growth, the next thing which will come is to create infrastructure. Without infrastructure, the growth cannot be built, growth cannot be increased. So infrastructure, inclusive and sustainable industrialization with innovation.
Now 9 is also a square of 3, a square of 3. So a square of 3 means यहाँ पे there are 3 I's: infrastructure, industrialization, innovation. 3 I's. Also the ninth letter is I. So उससे आप you can remember is ये industry, infrastructure, innovation से related होगा. 10th number पे what comes is when you have ensured growth. Now what will happen? There can be inequality within the country and among the countries. जैसे ही कहीं डेवलपमेंट होता है तो वो होता है ना 10% के बाद 70% है. ऐसा एक पूरा ऑक्सफैम का रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं. And when there is economic development, what happens is people are getting jobs mostly in the urban areas. A lot of migration happens. So the next priority which comes is making cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. Now 11 also looks like a road, highway, and highway goes to the cities. So 11 is related to cities and human settlement, through which you can remember. Now comes the SDG 12. Now we have ensured a safe, resilient city, sustainable. Now there will be, in cities there will be production, consumption. In the city level, the production consumption level is very high. There is generation of waste, there is generation of so much of consumerism develops. So to ensure that there is a kind of harmony, there should be a sustainable consumption and production patterns. That comes next. After that, if we are, say for example, consumption and production directly affects the environment. So now the next SDG goal 13 talks about combating climate change and its impact. After that, when we are ensuring climate change, the climate change affects most ocean, seas and marine resources. If there will be ocean warming, सबसे पहले phytoplankton will be affected. When phytoplanktons are affected, the whole ocean ecosystem gets affected. So the 14 is related to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. Life below water बोलते हैं. So 14 run पे LBW हो गया. LBW, life below water. ऐसा कुछ trick you can make and you can memorize this. Also there are 5 oceans. So 1 plus 4, 5. Initially ये क्वेश्चन को माना नहीं जाता था and then it was included, तो 1 plus 4, 5. There can be certain other tricks as well. उसके बाद आता है protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, manage forest, desertification. So ocean के बाद फिर जो चीज़ें affect होती हैं सबसे ज़्यादा वो होती हैं आपकी forest affect होता है, फिर terrestrial ecosystem भी होता है, तो फिर उसको combat करने की और protect करने की, restore करने की बात हुई है. Then comes the 16th नंबर. अभी environmental degradation होने से क्या होता है कि जो poor people होते हैं वो सबसे ज़्यादा affected होते हैं. कई बारी there is a sense of disorder which is created within the society, degradation के कारण. Naxalism क्या था? When their rights, when the environment started degrading, when their lands, forests started getting away from them, then justice and law and order का issue create हो गया. तो promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable and inclusive institution at all levels. To maintain all this, we need this justice. Justice नहीं होगा तो maintain नहीं हो पाएगा. Accountability and inclusive institution होगा तभी ये सारी चीजें जो 1 से 15 है वो हो पाएंगी. अब now to achieve this 17 एक साथ, हिंदी में बोलते हैं एक और साथ, एक साथ सबको मिलकर आना पड़ेगा एक टेबल पे. तो 17 is related to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. I hope अगर आप इसको एक कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपको दिमाग में रहेगा. मोस्टली दिस आर आस्क्ड इन PCS और कभी कभी यूपीएससी भी घूमते भटकते मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी यूटिलाइजेशन है. तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच.